Now students, today we'll discuss accountancy part 2, chapter number 2, accounting for debenture. Now first we'll discuss debenture, then the important points relating to debentures, types of debentures. Okay, normally the company issues the share capital for the requirement of long term funds. Normally company issues share capital for the requirement of long term fund. Share capital for the requirement of long term funds. जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, then for that company issues the equity shares or a preference shares, that means the share capital for the long term funds. After issuing the long term funds, or company get the long term funds by issuing the share capital. If any additional capital is required in business, if any capital required in business, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि ये कंपनी है और कंपनी इश्यूज दी शेयर कैपिटल, इट मीन्स शेयर्स, देन द शेयर कैपिटल बिकम्स ₹5 crore. If the company requires ₹6 crore, company required ₹6 crore, that's called a total requirement. Company requires ₹6 crore, so company get the 5 crore from the shares, and the remaining 1 lakh company can get out of the loan. In a simple language we can say is from the borrowed fund. It's a borrowed fund, or it's maybe the bank loan from the financial institutions, and one another things. Then company borrowed from the publics. Company borrowed from the publics, that's called debenture or a bond. Debenture or bond, and we'll discuss in this chapter debentures. So company get the additional required fund by issuing the debentures, by issuing the debenture or a bond. That's additional 1 crore rupees company get from the publics, or get the borrowed from the public. It is known as a bond or debenture. So we know very well borrowed fund is the liability. Borrowed fund is a liability because we have to return it, or we have to pay, and it's become a payable, or all payables are known as liability. For that, in a simple way says the company gives the certificate or a document accepting their liabilities. For example कि ये company है and that's a public. फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को 1 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने यानी कि यहाँ से सभी को एक सर्टिफिकेट दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दैट्स एक्सेप्टिंग देयर लायबिलिटीज और डेट्स. कंपनी इश्यूज द सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स दैट company accepting their liabilities, it means dates, it is known as debenture. That's number of debenture.
and the amounts, rate of debenture, the redemption time, all are mentioned in a debentures certificate. Company issue the debentures, and in debentures number of debenture, rate, redemption time, when company return it, all things are mentioned in the debenture. And again the debenture is the certificate of accepting the liability or debt of the company. Company means liability accept कर रही है. Now the some important relating points of debentures. Debentures से related some points we'll discuss. First one, debenture is a document relating to the money lent or given as a loan to the company. डिबेंचर वो मेंशन कर रहा है कि कंपनी को एज अ लोन मीन्स पेमेंट किया हुआ है, एंड इट मीन्स डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट देन कन्फर्म्स दैट द डेट्स ऑफ द कंपनी. अभी अभी हमने डेफिनेशन यानी उसमें डिस्कस किया कि द डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स दैट द डेट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि ये कंपनी की लायबिलिटी है. और इन अदर वर्ड वी कैन से इज द कंपनी बोरोड फ्रॉम द पब्लिक. कंपनी बोरोड फंड फ्रॉम द पब्लिक, से कंपनी ने पैसे लिए हुए, दैट्स अ लायबिलिटीज है. नंबर 2, डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी दैट बियर्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिबेंचर सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, सी द रेट, इट मीन्स द इट मेंशन लाइक 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर. तो नेम ऑफ द डिबेंचर मेंशन दैट द 8% is the per annum interest rate. It shows the rate like the 10% डिबेंचर है, then it shows the 10% interest per annum. So the debentures, the securities that bears a fixed rate of interest on which the interest is payable on a predetermined date. देन डेट पहले से फिक्स है कि कौन सी डेट पर इंटरेस्ट पे करना है. हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स इवन इफ इट हैज़ अर्न प्रॉफिट और नॉट अर्न अ प्रॉफिट. इवन कंपनी गेट्स द प्रॉफिट और लॉस, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, कंपनी को कंपलसरी डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना है. नंबर 3, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार मीन्स इसी में से टॉपिक होता है, सो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, कीप इन माइंड. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल एट द फिक्स रेट एंड सो द डिबेंचर्स आर नॉन बाय द रेट. डिबेंचर्स आर नॉन बाय द रेट. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन डिबेंचर देन इट इज नॉन एज रिटन एज द 8% डिबेंचर. इंटरेस्ट इज चार्ज 10% देन इट कंसिडर एज अ 10% debentures. So it shows the rate of interest. Number 4, when the debentures are issued for a fixed terms, the money borrowed against such debentures is repaid at the end of a fixed terms in accordance with the agreed terms. यानी कि 5 years के debentures हैं, 5 years के लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं, तो आफ्टर द 5 years or after completing the 5 years we have to redeem the amount of debenture, or the company has to redeem the amount of debenture to the public. यानी पब्लिक को वो पैसे कंपनी क्या करेगी, रिटर्न करेगी एज पर दी अकाउंटिंग टर्म्स. जो भी टर्म्स डिसाइड हुई है उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी. 5 नंबर, as per the Companies Act 2013, as per Companies Act 2013, no company is allowed to issue the debentures having a maturity date of more than 10 years. As per Companies Act 2013, company cannot issue
debenture more than 10 years, more than 10 years. And the exceptional case है यहाँ पे एक, however the company engaged in infrastructure project projects, company can issue for 30 years, company can issue the debentures for 30 years का यहाँ पे कंपनी 30 years के डिबेंचर इशू कर सकती है. More than 10 years but not exceeds 30 years, company can, means the company engaged in infrastructure projects can issue debenture more than 10 years but does not exceed 30 years. That means in a simple way we can say is the company engaged in infrastructures project can issue the debentures for the maximum or not more than 30 years or for maximum 30 years. 30 years के long period के लिए issue कर सकती है. In all the normal cases company cannot issue the debentures for more than 10 years. In exceptional case, if the company engaged in infrastructure project, कंपनी कैन इशू द डिबेंचर फॉर 30 years. 30 years के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है. नाउ नेक्स्ट, नाउ 6 नंबर, डिबेंचर कैन बी इशूड विथ और विदाउट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. चार्ज द असेट्स मीन्स मॉर्गेज और हाइपोथिकेशंस. चार्ज द असेट्स यानी कि मॉर्गेज और हाइपोथिकेशंस, यानी डिबेंचर जब भी हम मीन्स मॉर्गेज करवा मीन्स यानी डिबेंचर जब कंपनी इशू कर रही है तो असेट्स को मॉर्गेज करवा सकते हैं. तो विदाउट एंड विथ चार्ज ऑन दी असेट्स, तो डिबेंचर कैन बी इशूड. ये सिंपल टॉपिक है. डिबेंचर कैन बी इशूड with or without charge on assets of the company. तो सिंपल है कि कंपनी मीन्स लॉजिकली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर की सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर होल्डर और द डिबेंचर कैन बी इशूड विथ और विदाउट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. द चार्ज ऑन असेट्स दैट मीन्स मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन. चार्ज ऑन असेट दैट मीन्स चार्ज ऑन असेट्स, चार्ज का मीनिंग हो रहा है यहाँ पे मॉर्गेज और hypothecation. And we know very well mortgage means और hypothecation अकाउंटिंग टर्म्स मीन्स आगे डिस्कस हुआ. मॉर्गेज का मीनिंग हो रहा है, हाइपोथिकेशन का मीनिंग समझ लो अच्छे से कि इफ़ द कंपनी फेल टू पे द डिबेंचर्स होल्डर्स, इफ कंपनी फेल टू पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर, then debentures holder can get their money by selling the assets सेल करके भी मीन्स यानी उनके पैसे रिटर्न मिलेंगे. सो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज बोरोवर्स और lenders, the money lenders always make the mortgage of the assets for the security purpose. Next one, 7 number, usually debentures are listed on the stock exchange after the issue thereof, and purchase or sales of the debentures are traded at the stock exchange. The market value of such debentures could be more or less than the price of issued.
तो लिस्टेड डिबेंचर्स वी कैन से इट्स अ लिस्टेड डिबेंचर जो है यानी वो कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि जिसका रजिस्टर हो चुका है वो कंपनी की प्राइस प्लस माइनस हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज देन द इश्यूड प्राइस. सो वी कैन परचेज और सेल्स द डिबेंचर्स. तो दैट्स अ ट्रेडेड डिबेंचर्स यानी ट्रेड उसका हो सकता है. नाउ 8 नंबर, इफ द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, terms of issue of debentures, so provide the debentures can be converted into shares. debentures can be converted into shares. हम डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. the debentures can be converted into shares. डिबेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट इज द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो पॉइंट आने वाले हमें. टाइप्स ऑफ डिबेंचर में यही टॉपिक हम चेक करेंगे. Normally debentures are listed on the stock exchange. Sorry, it can be, and if the terms of issue of debentures so provide, the debenture can be converted into share. So that's converted into share. जब भी हम डिबेंचर इशू की है तब ये प्रोविजंस होनी चाहिए तो हम डिबेंचर को यानी कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, debentures are shown as a long term borrowings. It's a long term borrowing. Under the heading non current liabilities, under the heading non current liabilities on equity and liability side, on equity liabilities side, on equity liabilities in the balance sheet, in the तो बैलेंस शीट में हम मीन्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सिंपल है वो. नाउ 10 नंबर, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. नो वोटिंग राइट्स, नो voting rights. To this selection of directors, equity shareholder have a right for the votings, but the preference share and the debenture holder does not have any voting rights. उनको कोई voting rights नहीं है. in any matter of the company, no voting rights in the any matter of company की किसी भी मैटर में उनको कोई राइट्स नहीं है. देन डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स, ओनली दे हैव अ राइट टू गेट देयर इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट. उनको फिक्स रेट जो इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट मिल सकता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वन, डिबेंचर्स आर शोन, सॉरी 11 नंबर, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड, कैन नॉट बी forfeited. We studied in our chapter number 1 in a share capital. Then when the shareholder fail to pay the call money, then the shares will be forfeited. But in case of debentures, we cannot be forfeited the debentures. We cannot forfeit the debentures. If any debenture holder does not pay any amount on debentures, डिबेंचर की सपोज अमाउंट नहीं मिल रही है तो हम उसको फोरफिट नहीं कर सकते. Ending, in the event of liquidation, when the company goes into the liquidations of company, the debenture holders are repaid their money before the payment of equity shareholders, or we can say equity shareholder or preference shareholder both. तो सिंपल लैंग्वेज में डिबेंचर होल्डर आर पेड, debenture holder are paid their money before shareholder, that means shareholder यानी equity and preference both, equity plus preference share, दोनों प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों प्रेफरेंस यानी कि शेयर होल्डर से पहले यानी कि प्रायोरिटी किसको मिल रही है, डिबेंचर होल्डर्स. इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब भी कंपनी फॉर्म हमारी कंपनी लिक्विडेशन कर में जा रही है तो इन दिस केस डिबेंचर होल्डर्स हैज़ अ राइट टू गेट देयर मनी
before the preference and equity shareholder, and debentures the amount is secured or they get the priority before the equity and preference shareholders. नाउ ये नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसी में से कई बार में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और नेक्स्ट जो हम हैं नॉर्मली जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.